might look a little similar, but let us go with Periyar Panthers as purple and Hampi Heroes as black, because there is more black in the Hampi Heroes and there is more purple in the Periyar Panthers' jersey. As 208th point there for Ashish Narwal. He makes it very easy on Sandeep from the left corner. और क्या शिकार बना है, देखिए कितनी आसानी के साथ, कितना आसानी के साथ ये रेड करते हुए नजर आते हैं। और देखिए ये क्रैब्स, ये बैंडेजेस बताती है कि ये खिलाड़ी मेहनत का धनी है, ये मेहनत करना जानता है। और एक और खिलाड़ी के आपके राइट कॉर्नर पर अगर आप ध्यान देंगे ना, तो उनके भी राइट आर्म पर कुछ बैंडेजेस मौजूद हैं। वो कौन है? वो हाईएस्ट टैकल जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में प्राप्त किए, नवीन। यानी कि क्या एक इंपॉर्टेंट हो गया है कि नवीन की जो भी बेस्ट रेडर है, बेस्ट डिफेंडर है, उनके पास बैंडेजेस होनी चाहिए इस तरह से हाथ पे। Yeah, good point, Harshit. But so Naveen Sharma, I'm really impressed with the way that he is going in. But I am also concerned when he does not have the Sultan of Surprises in the chain alongside with him, because Ankit has been such a good assist, as once again Rinku steals away a bonus and goes across, and Periyar Panthers are leading now this by 2 points. And Sonu Azad walks in 116 straight points. You're just talking about Naveen Sharma. Now you just see the Sultan of Surprises not in the ring, and then the ring does not come across together, and the combination of Ashish Malik and Ankit is not so lethal like it is for Naveen Sharma and Ankit. Look at that. Ankit is not in coordination with Ashish Malik as he is so coordinated with Naveen Sharma, and lets the chain go. Ashish and goes in for the tackle. A hasty one as Hampi Heroes open their account. But yeah, just speaking about Naveen Sharma without Ankit, looks very less lethal. So I am somewhere little concerned on that, but the opposition raiders need to figure that out. That is the weak link that I can really break upon, because 51 tackle points to the Sultan of Surprises. It's definitely not right to not mention about his assists towards Naveen Sharma, 68 tackle points. If I am the real statistician that who can break down into mathematician, if I am the there you go, has he gone in? Oh, he saved himself. If I should give you a name, last seconds, absolutely. तुरंत वहां पर लॉबी के जाते बचे, और अच्छे यहाँ पर बैलेंस ये बताता हुआ कि नितिन धनकर भी बतौर रेडर और लगातार गलतियां यहाँ पर डिफेंडर्स अब करता हुआ नजर आ रहा है। पहले वहां पर आशीष मलिक ने की थी पेरियार पैंथर्स से, इस बार हम्पी हीरोज का कवर डिफेंडर्स। क्या देखना होगा वहां पर कौन से खिलाड़ी मौजूद थे? Yeah, it was Mohit Narwal there. Harshit was such a defender who's got the highest tackle points for Hampi Heroes, 33. So he does not come across Rinku. Yeah, it does not come across Rinku. There, I was just mentioning about the statistics. As a block comes in very, very strong from Anish from right cover and puts the raider out. Just speaking about that statistics once again before we get into the next raid. This was an easy tackle there for Anish. Without Ankit, it is basically not happening for Naveen Sharma. That's all I can probably go ahead and say. If it is 68 tackle points, I should be saying 30%, or rather even 60% will be coming in with the assists of Ankit. जी, और इससे ये भी पता लगता है कि इन दोनों कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है। और देखिए कबड्डी का खेल ही कॉम्बिनेशन का है ना, कि किस तरह का कॉम्बिनेशन कितना अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं, कितना समय एक दूसरे के साथ व्यतीत करते हैं। और देखिए अक्सर वहाँ पर अंकित जब टैकल के लिए जाते हैं तो वो अक्सर सोलो टैकल्स करना वहाँ पर लगातार करते हैं, क्योंकि वो टैकल्स ऐसे करते हैं जैसे डबल थाई होल्ड हो गया। नवीन शर्मा बतौर कॉर्नर खिलाड़ी है तो वो एंकल होल्ड्स पर ज़्यादा वहाँ पर ध्यान देते हैं। और कवर डिफेंडर्स की हमने जिस प्रकार से हमने पहले भी मुकाबलों में बात की कि कवर डिफेंडर्स का कार्य ज़्यादा रहता है डैश करना, ब्लॉक करना। कॉर्नर्स का कार्य रहता है डबल थाई होल्ड, एंकल होल्ड, कभी कभार ब्लॉक भी काम आता है। बहुत कम अपोजिट कॉर्नर से आप देखते हैं वहाँ से डैश होता है। और सोनू आज़ाद की आपने लगातार चर्चा की, पिछला मुकाबला बहुत अच्छा रहा था, 116 रेड पॉइंट्स इनके पास भी है। यानी कि ये जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं नितिन धनकर का, वो भी सच में अच्छा है। और शुरुआती समय में क्या नवीन आज आप यहाँ पर देख रहे हैं पेरियार पैंथर्स एक कंफर्टेबल विन की तरफ जाएगा, या फिर एक उन्हें कड़ी प्रतिद्वंद्वी मिल सकता है हम्पी हीरोज के रूप में? Yeah, see, it is a big question to be answered, as Periyar Panthers is not letting go of the points that is coming in from Ashish Narwal. Look at this. Look at how quick he finds a way across in between the defenders and goes across as if he's raiding in the Jaipur's traffic.
in the Pink City, where you have that Market Road in the Pink City, and then it's too bustly for a bike rider to get a 5 feet across, and then that's what Ashish Narwal is doing. But having said that, let me also just go back one more point in with your question, Harshit. If Hampi Heroes should probably get back here on the Periyar Panthers, just remember that game where the Periyar Panthers won it very closely with the Kaziranga Rhinos when they were playing against them. So what happened there was you had two big heavyweights clashing against each other. One, the great Rhino, and there you see the good block, super tackle, and done and dusted. This is nice. And the captain from Hampi Heroes, Nitin Deswal, gets 2 points very, very comfortably. So when two super giants clash across each other, that's what happened in the Kaziranga Rhinos match when Periyar Panthers were going all guns blazing. So you need that one raider who can go against the Periyar Panthers defense and keep getting in points. It's just before this match, it was just 5 points that was separating Pratik Dhaya and Ashish Narwal. As in a do-or-die race, Sonu Azad gets an easy hand touch on the left cover. बहुत ही स्फूर्ति के साथ, बहुत ही क्लेवरली उन्होंने देखिए जिस अंदाज में यहाँ पर रनिंग हैंड टच किया है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से यहाँ पर रनिंग हैंड टच करते हुए नजर आए। और नंबर 11 यानी कि आशीष उम्मीद को आज मौका मिला यहाँ पर पेरियार पैंथर्स से कि आप जाइए। और कवर डिफेंडर्स की चलिए हम बात ही कर रहे हैं तो थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे अनीश की। जिस तरह से इस युवा खिलाड़ी ने अपना कार्य दर्शाया है, पिछले 3-4 मुकाबलों में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और जो कवर पोजीशन जो पेरियार पैंथर्स के लिए थोड़ा सा एक वीक पॉइंट बन रहा था सर्वाइवल राउंड के समय, और उसके बाद मुकाबलों में अनीश ने पूरी तरह से उस पोजीशन पर इंसाफ जताया है। अब जरूर सुल्तान ऑफ सरप्राइजेस अंकित गए थे रेड के लिए। और इनके टैकल पॉइंट्स की आपने बात की, 51 टैकल पॉइंट्स उन्होंने प्राप्त किए हैं, 6 हाई 5 लगाए हैं। ये बहुत ही अच्छा स्टैट्स नजर आता है। और नवीन के बारे में भी आपने कहा कि इन दोनों कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है जो आपको देखने को मिल रहा है। And it's nice. Yeah, absolutely. And it's nice that Nitin Dhankar is going and attacking them. That is nice to see. I like that kick that came in, keeping your legs away from Ankit. This is nice, and he gets through the midline also. Is it? Yeah, men are being counted, and Sumanji will give away a super raid there for Nitin Dhankar. This is the right time just to speak about the big raider for Hampi Heroes, where the right flank is completely devastated and washed off from the Periyar Panthers, and for the first time Hampi Heroes are leading this by 2 points. And just speaking about Nitin Dhankar, he was just watching the match on television in 2017 there, Harshit, Nitin Dhankar, and then he was so fascinated about this wonderful game. He started training, and all thanks to his Tauji that he has helped him a lot, because Nitin Dhankar lost his father serving in the Indian Army when he was just very in a toddler age. He was just 5 months old when his dad left him. And Nitin Dhankar once again coming into that super tackle situation which is on. And the reason why he is so flexible and the reason why he is so swift on his feet like this, and these easy points being scored, is just because of yoga. When you perform yoga every day, just for at least 30-40 minutes, you do not want any heavyweight training. You become more lethal than any if I should be calling protein mass builder or a protein mass shake that's coming in every time, which is becoming so famous towards the youngsters nowadays. Yoga is such that it can just make away of everything, and you can be one of the Nitin Dhankars. As now, Rinku, can he save Periyar Panthers from a big all-out? Harshit, what do you think? Come on, quickly. नहीं जा पाएंगे निश्चित तौर पर। और जे हम बात कर रहे थे यहाँ पर, बहुत सही आपने बात की। और कल भी हमने राधिका के साथ जब कमेंट्री बॉक्स में थे तो हमने बहुत ही स्पेशली मेंशन किया था, खासकर प्रेजेंटेशन में भी हमने उनसे जब बात की थी तो यही पूछा था कि वो लगातार योगा पर अपना फोकस जताते हैं। उनके कोच से असिस्टेंट कोच भी बताते हुए कि नितिन धनकर हमेशा अपने बिजी स्केड्यूल में से, देखिए किसी को भी समय मिलता नहीं है ना नवीन, आपको अच्छे कार्यों के लिए समय निकालना पड़ता है। और वो समय हम तो जिंदगी में समय ही समय है हमारे पास। वैसे ऐसा नहीं है, जब एक्सरसाइज का बात आता है तो समय ही समय है हमारे पास। और देखिए अब नितिन धनकर, ये फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए इनमें मुझे अलग रेडर्स की जो क्वालिटी है वो नजर आती है। ओ सुल्तान ऑफ सरप्राइजेस को शिकार बनाया है यहाँ पर। देखिए बहुत जल्दी उन्होंने दिखा दिया था, ये उन्होंने बहुत जल्दी दिखा दिया था। और ये मुझ में एक आकर्षण का केंद्र नजर आता है नितिन धनकर में, कि वो हमेशा जब रेड करते हैं
वो चारों दिशाओं में देखते हैं, उनका ध्यान होता है चारों दिशाओं में, वो हर एक डिफेंडर पर अपना ध्यान जमाते हैं। और क्यों जमाते हैं? क्योंकि वो इस तरह से लगातार योगा की पोजीशंस और योगा जिस तरह से वो करते हैं बहुत मदद करता है एक जीवन में आपको सफल जीवन बनाने के लिए। और आपने नितिन धनकर की स्टोरी की बात करी, जल्दी ही हम और भी किसी खिलाड़ी की यहाँ पर बात करेंगे। नवीन शर्मा से मैं शुरू करूंगा, पर उससे पहले इस रेड के बारे में देख लेते हैं। नवीन सोनू आजाद एक बार फिर से। And somewhere Ashish Narwal is trying to keep up that pace of getting the points for Periyar Panthers, and he stole away that bonus. But here, what should the defense of Hampi Heroes do is what I'll say, as Sonu Azad probably does not look in to go in for the kill, as he just played around on the bot line. I'm sure he will come back empty-handed, no doubt about that. But then, when Ashish Narwal goes in with the Hampi Heroes, I'm okay. If I was a defender, I'm okay to give him the bonus points. I'm okay to just let him go with 1 point each raid. That's fine, because for a raider who's got more than 210 points, it's a respect that you're kind of showing him. But where do you lag is when such a brilliant angle hold does not get effective against Ashish Narwal. Now Riku has been pinned down with a beautiful ankle hold by Pitu, who's done really nice, and he got the support. I will not give a touch point to Ashish Narwal. That is what I will be really clear about. When you don't give him a touch point, he becomes very hungry. He becomes very impatient. That is what I want to see Ashish Narwal as. Because what an ankle hold. नवीन शर्मा, एक बार फिर से नवीन शर्मा। चलिए इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 2016 में इन्होंने कबड्डी खेलना शुरू किया, और इनकी अगर हम भाई की बात करें और साथ ही साथ इनके सीनियर प्लेयर सुनील जयपाल की बात करें, जो प्रो कबड्डी में फ्रेंचाइजी लीग में अपनी टीम्स के लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर चुके हैं। और इन्होंने अमित हुड्डा के अंडर ट्रेनिंग लेनी शुरू की। 2020 में इन्हें मौका मिला स्कूल नेशनल खेलने का, और उसके बाद इन्हें 2022 में मौका मिला जूनियर स्टेट हरियाणा खेलने का। और अमित हुड्डा ने जिस तरह से इन्हें सपोर्ट किया है, परंतु आशीष नरवाल देखिए इनके अंदर हंगरनेस है, ये पॉइंट लाना जानते हैं और किसी भी तरह से ये पॉइंट ला सकते हैं। और अब नवीन शर्मा का जो एम है, जो गोल है कि वो एशियन गेम्स में आने वाले समय में इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करें। एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, और नवीन शर्मा के बारे में एक स्पेशल लाइन मेंशन ही करना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा सीखा है, और अमित हुड्डा ने इन्हें एक नया खिलाड़ी बनाया है। जिस तरह से इन पर कार्य किया है वो सच में काबिल तारीफ है। No, absolutely. All credits there for Naveen Sharma. But somewhere he comes around this time, and then he gets weaker if Ankit is not in the chain. That is what I really do not want to see. He was actually thinking Sonu Azad got blinded himself. But then the inward turn of Sonu Azad, even with the back hold, making him go through the midline very easily. Now let me tell you something. Sandeep in that left corner, in the far corner there, just on the top of our screen, number 7 jersey in the black for Hampi Heroes, should not be playing so high line defense. Look at that. He's not going to get anything out of Ashish Narwal if he's doing that. He's got him on a couple of occasions. You don't have to give him a touch point. Simple. Just stay around. No, come on. This is not what I was asking for. And now the captain also goes across and gives a touch point. See, if you do not give a touch point for the biggest raider, he gets impatient. I want to see Ashish Narwal get impatient. Nothing taking away from that, Harshit. Don't get me wrong, and don't penalize me for that. But I'm just saying, I want to see Ashish Narwal get impatient. I want to see how he handles that impatientness. As once again, Nitin Dhankar gets out Naveen Sharma. So have you ever seen Ashish Narwal getting impatient? Never, right? Because he's been getting touch points. I want to see him impatient. I want to see how he handles that situation. बूस्टर राउंड में आपने उन्हें इंपेशेंट होते हुए देखा नहीं, जिसके चलते 5 में से 5 जीते हैं मुकाबले। परंतु अगर आपको याद हो, आशीष नरवाल सर्वाइवल राउंड की शुरुआत में एक दफा समय ऐसा आया था, शायद तीसरा या चौथा मुकाबला उनका सर्वाइवल राउंड में था, कि आशीष नरवाल को विपक्षी टीम, और शायद वो अरावली एरोज का खेमा था, इतना अच्छे से मुझे याद नहीं नवीन, पर वहां पर सिर्फ एक समय था और वहां पर अरावली एरोज ने शायद उन्हें पटकनी दी थी पेरियार पैंथर्स को। तो जब आप आशीष नरवाल को यहाँ पर अपना शिकार बनाएंगे, संदीप ने इंतजार किया, देखा कि आशीष नरवाल की नजरें हटी, तो चलिए इस बार एंकल होल्ड किया जाए, और पूरी डिफेंस का साथ वहां पर मिला। हम्पी हीरोज के लिए एक खुशी की लहर है। एब्सोल्युटली, और लहर उस पॉइंट के साहिल को मिलता हुआ, माय गॉड, व्हाट अ पोएट्री, इजंट इट?
very grateful. Right, now it is time for Nitin Dhankar to probably clean it up somewhere, but the Raider is out. It was a very, very big opportunity as Ankit and Ashish Narwal both were not there on the court. But look at this for the speed of the dash that came in from Ashish Malik this time from left corner. He went in so quickly on top of Mohit Narwal and went in for the dash. Yeah, I keep generally saying this where the corner defenders will somewhere fall flat and will not be successful in dashing. But Ashish Malik showed that if the corner defender has speed, he can be successful. As once again Rinku tries to bring back some men on court. But yeah, just speaking about Nitin Dhankar, who just went out on the court and a pursuit. Has he been awarded? I guess he's been awarded. That's really well done by Bitu from the right corner. Yeah, beautifully done. As Rinku was taking all the time in the world to go back. And look at that. If you are casual, you become casualty on the kabaddi mat. But not against this man. Not against this man. There you go. He's got 2 points. He's got a super raid. Bonus plus 2. That is Sultan of surprises for us. देखिए कितने सेकंड्स लगे इन्हें, इतनी जल्दी गए, इतनी जल्दी आए. क्या किसी ने तूफान को देखा है? देखिए मैंने अंकित को देखा है. ये सुल्तान ऑफ सरप्राइजेज हैं. ये मुझे लग रहा है कि क्या थोड़े दिनों में पवन की तेजी से जिस तरह से जितना जल्दी गए, जानते थे वहां पर सिर्फ थोड़ा सा ललचाया, जानते थे वहां पर शायद संदीप प्रयास करेंगे कि आशीष नरवाल आउट ऑफ द कोर्ट अगर हैं, अंकित को भी आउट ऑफ द कोर्ट करें. अब तो जरूर आशीष नरवाल वहां पर रिवाइवल होकर आ चुके हैं. तो संदीप को वहां पर ललचाया थोड़ा सा, फिर कवर जानते थे कि शायद वहां पर उनका साथ देने के लिए आएगा, उन्हें भी टच किया, बोनस प्राप्त कर ही लिया था. तो ये है नवीन का प्रदर्शन. एंकल होल्ड के माहिर है ये खिलाड़ी नवीन शर्मा. अमित हुडा की हमने बात की और बिल्कुल उन्हीं की तरह यहाँ पर ये डिफेंस करते हुए. Yeah. See, he's very strong in the ankle holds, and he's very strong if he does not have Ankit in the chain to go in for the ankle holds only. So that is his strength. He has to play on that. But then when he goes in front of the defender for the double thigh hold or for the block without Ankit in the chain, he somewhere looks a little weak. So he'll have to play on his strength. As once again Ankit goes in with the running hand touch. He says he's touched him. Raider out is the question, and then the card comes out from Sumanji. Right, also what has happened is without the touch point, he's gone into the lobby, and I do not see that, but somewhere Ankit would have felt it. But then going into the lobby also is one error, and then he broke the chant, Harshit. He broke the kabaddi chant also. So, 2 errors against Hampi road. Sultan of surprises. Yeah, that's why the point has been awarded to Hampi Heroes. See, just imagine this. He goes in without a connection, is what I believe, into the lobby, does not cross the midline, and then starts swearing on the mat and forgets the kabaddi chant. So much can happen if your emotions are not controlled. और बिल्कुल आपने सही कहा. देखिए नवीन, पहले भी आप जिस तरह से कहते हैं कि चलिए बात हमें करने दीजिए, कमेंटेटर्स हैं यहाँ पर बात करने के लिए, परंतु चलिए इस बार अंकित ने बात करने का प्रयास किया. रेफरीज को याद है कि उन्हें क्या करना है, वो कभी नहीं भूलते हैं कि उन्हें क्या करना है, और उन्होंने तुरंत ग्रीन कार्ड निकाला, कहा कि अंकित कबड्डी में आवश्यक है आप कबड्डी चेंट करें. और चलिए No, also let me tell you something. Yeah, sorry Ashit. Let me again, let's have this discussion. It's very important because as youngsters are watching this game is growing. This game is just going to all hook and corners of the world, and superstars like Ashish Narwal. There we go. He won't talk. The quick toe touch. He says, right, I like this. I really like this. He does not even talk, and if he's not confident, he will not go into the lobby also. This is what I was trying to say. Let me again just give this as an example, Harshit, as Nitin Dhankar is raiding. Let us get that green card on a very serious note. When we need to maintain that with a surprise tackle coming in, that's right. And Nitin Dhankar has been pinned down. But let's have that green card a little more serious is what I'm actually feeling now on Yuva Kabaddi Series, because this is getting too much. Somewhere if one green card has been awarded, I will probably say we haven't seen a yellow card. I think only one yellow card which came against the Aravali Arrows, I think, who was sent out for 2 minutes on the bench. But for me, without a struggle, it has to go down. So if you have to say to make sure the green card is having more value, I guess the penalization should come in, because
Green cards have been flashed left, right, and center, but then we do not have a count of it. How many player is having how many green cards, right? या बिल्कुल सही आपने बात कही नवीन, और इसीलिए बड़ा खास होता है, चाहे बतौर खिलाड़ी हो या फिर चाहे बतौर रेफरी पैनल हो। कितना ज़्यादा महत्वपूर्णता के साथ आपने बताया है नवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परंतु मैं जिस तरह से बड़ा वहाँ पर प्रभावित हुआ था, जिस तरह से अनीश ने वहाँ पर वो जो ताकतवर ब्लॉक किया था नितिन धनकर के विरुद्ध, और उसके बाद हम्पी हीरोज के डिफेंस ने आशीष नरवाल को दबोचा, ये सच में मजेदार डिफेंस देखने को मिल रहा है। और नवीन, एक कड़ा प्रश्न जरूर है, परंतु क्या आज आपको पेरियार पैंथर्स की पहली शिकस्त नजर आ सकती है? बहुत जल्दी ये प्रश्न पूछ रहा हूं, पहले हाफ में लगभग 15 से 10 सेकंड का समय शेष है, परंतु क्या आज आप ये देख सकते हैं? यस और नो में देखना चाहूंगा। No, it's a very important question, and this is the first time that Periyar Panthers are lagging behind in the first half. So I really want to see how they can come back in the second half, because Hampi Heroes have made sure at least the first half is won by them. At least the first half is going to the Hampi Heroes. This hasn't even happened in the booster round. If I really remember with the memory that I have, which evaporates like water always, okay. But I can surely say that Hampi Heroes have done something which no other team in the booster round has done. This is the first time ever in the booster round that a team is leading against the Periyar Panthers, and that is what they really need to maintain in the second half. And I'm sure the second half will be tough to maintain this, because this man in the right side of our screen, Ashish Narwal, is going to come to you red hot. और नवीन, बड़ी शार्प मेमोरी में से आपकी, आपने कहा कि चलिए मेमोरी जरूर आपकी एवेपोरेट होती है अक्सर, परंतु मैं बताना चाहूंगी बहुत ही शार्प मेमोरीज है, और शार्प ये खिलाड़ी है आशीष नरवाल, परंतु नितिन देसवाल ने अपना कई बार शिकार बनाया है, और यही कहानी रही है। जितनी देर तक आप वहां पर आशीष नरवाल को बाहर रखेंगे, नितिन धनकर को बाहर रखेंगे, उतना पेरियार पैंथर्स के लिए अच्छा होगा। जितना आशीष नरवाल बाहर रहेंगे उतना हम्पी हीरोज के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये दोनों रेडर बहुत अद्भुत रेडर्स हैं। नितिन धनकर मुझे बहुत इंप्रेसिव नजर आते हैं, आशीष नरवाल के पास थोड़ी सी ताकत जरूर ज़्यादा है, परंतु स्पीड मुझे नितिन धनकर में थोड़ी सी अतिरिक्त नजर आती है। आशीष नरवाल के पास एक हाइट है, और देखिए इस तरह से टैकल्स किए गए हैं, पिट्टू और संदीप अच्छा नजर आए हम्पी हीरोज के लिए, बस और कॉर्नर नितिन देसवाल अच्छा नजर आए, मोहित नरवाल आप चाहेंगे सेकंड हाफ में उनसे बेहतर करना, और बिट्टू का एंटिसिपेशन अच्छा नजर आया। और सुल्तान ऑफ सरप्राइजेस की बात की जाए तो अभी तक थोड़ा सा ऑफ कलर है, पर चाहेंगे सेकंड हाफ में ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। और आपने बात की येलो कार्ड की नवीन, तो सोनिक के एक खिलाड़ी को येलो कार्ड मिला था, मुझे जहां तक याद आ रहा है, युवा कबड्डी सीरीज में। No, actually, I agree. And also let's take this opportunity to just have a conversation about the cards that has been flashed left, right, and center here, Harshit. See, what happens is there's a lot of green cards, and we've just walking into what? I guess this is just a 60-second game, is it? If I'm not wrong, 60-second game, na? I feel, this is a 60-second game, and I feel we've seen around 60 green cards. So every match we've seen 67th match. Yeah, sorry for the correction. 67th match, and I have seen at least 67 green cards. If you even break down into average of 1 green card per match, it is 65 green cards. So it is completely not right when you are playing in an international arena like this on Yuva Kabaddi Series. So somewhere now I will really request the referees. See, I understand this. The Josh, Jazba, Junoon of the players, yes, marvelous. It's brilliant. It's awesome. And Yuva Kabaddi Series has reached greater heights. And now this is a time for us to think like Spider-Man. With great responsibilities, I mean, with great powers comes great responsibilities. So that is what we need to think like on. Because now everybody knows everybody. Now you cannot say, okay, who is Nitin Deswal? We don't know who's raiding now. No, nobody can say that. And we cannot just say who is Navin Sharma, who goes in with an empty raid and goes back in the second half. And then they are playing on the do-or-die raid strategy. So somewhere it has to be very seriously maintained by the players, because they will be going ahead and playing some big franchisee leagues. And the substitute has come in, Akshit, who's just come in, and this is not the do-or-die raid, mind you, because when the half is finished,
the do or die raid count also gets finished. So in the second half, it starts fresh. So the substitution could have come in the next raid. Okay, and then that's the reason why Navin Sharma is going in and coming out of the empty raid once again. Now Akshit will get a do or die raid. So that green card should be immediately flashed onto a yellow card. What they can do is they can show the green card and then immediately, in the left pocket have the yellow card and flash it immediately. So that the 2 minutes penalty is been immediately awarded. If that can happen, it will be really nice. It will teach our lads a lot of sense on the kabaddi mat. As once again, Akshit is struggling under 5 seconds and he surrenders himself. Does not even get the bonus. Periyar Panthers. जी हाँ, बोनस जरूर नहीं मिलेगा. एक बार ऐसा लगा जरूर था कि वहां पर देखिए मिडिल ऑफ द कोर्ट जाकर उन्होंने बोनस लिया था, परंतु सुल्तान और सरप्राइजेस अब क्या सरप्राइज देते हुए नजर आएंगे यहाँ पर आपको. और अब यहाँ पर सुल्तान एक बार फिर से रेड पर है. 4 का हाउस है, पॉइंट लाना मुश्किल होता है. जॉन जम्पिल, नितिन देसवाल, क्या टीम के कप्तान प्रदर्शन बेहतर कर रहे हैं. देखना हो किसके पक्ष में जाएगा. क्या हम्पी हीरोज के पक्ष में गया है या फिर डैश कर दिया है. It's a strong dash. And it was a do or die raid for Ankit and Nitin Deswal taking full advantage of the pressure that little bit got into the Sultan of Surprises, because he was running in and not completely using the lobby. He was just making sure he runs to the midline from the court itself, and that is what helped Nitin Deswal for the dash. So Ankit, come on, you'll have to again get a little critical on the cards, bro. You can't just make away with that question. What do you feel? Immediately an yellow card awarded? Because it's 67 green cards. बिल्कुल आपने सही कहा, 67 ग्रीन कार्ड्स हर मुकाबले में ग्रीन कार्ड. पर देखिए येलो कार्ड क्या नवीन, थोड़ा सा पर आपने सही कहा शुरुआत में, अगर रेडर्स या हो चाहे डिफेंडर हो, किसी भी खिलाड़ी को गेम के वो डिसिप्लिन, वो अनुशासन होना बहुत आवश्यक है. परंतु क्या महत्वपूर्ण समय में वो 2 मिनट का समय और येलो कार्ड, क्या थोड़ा सा खिलाड़ियों पर थोड़ा सा हार्शनेस थी, कभी क्या खिलाड़ी के मन में वो आ सकता है. No, I understand it's a little harsh. Okay, let me also say, Harshit can't talk harsh, but Navin Shauri can a little bit. Okay, I know it is harsh. Okay, I know it's a little harsh, but we are preparing these lads for the bigger stage, isn't it? We are not just teaching them some big strategies on just the kabaddi mat. We're also showing and sharing them and giving that the experience and the responsibility how to handle the limelight. See, that is the biggest. इसके लिए क्या ग्रीन कार्ड का महत्व और थोड़ा ज्यादा हो सकता है क्या उन्हें? See, that's what I was trying to say. No, that's what I was trying to say. If there is a green card coming in, and Ankit has once again been pinned down today. He is struggling in the raid department, and he is not able to put up the fight that Periyar Panthers needs to put up in that second half. He just was blinded. He just turned back to see if somebody is following him, and then the right corner just falling on him and making sure he does not go back. Just talking about the green card again. Can we have this, if possible? See, again, we are just commentators. We just make our opinions or suggestions. That's it. The opposite turn from the great raider here, Nitin Dhankar, gets 2 points. This is nice to see. Navin Sharma has to go back, and along with Ashish Malik, both the corners there wiped out as the referees will get into a little bit of a conversation. A beautiful opposite turn. Look at that. Even before the raider could come in, that is Ashish Malik. The outward turn from the opposite end got through with Nitin Dhankar. But just talking about the green card. Can every time the referees, whenever they flash a green card, can they award a technical point to the opposition? Say for example, if Periyar Panthers Ankit is getting a green card, can Hampi Heroes get a technical point on every green card? At least that will increase the value of the green card. And even if the coach is been getting the green card, the opposition team will get a technical point. A technical point can be awarded anytime, right? Yes, that's good. और क्या एक बिल्कुल ग्रीन कार्ड से पहले एक थोड़ी सी क्या वर्बल वार्निंग हो सकती है जो अक्सर हमारे रेफरीज वहां पर देते हैं. No, I am sure a verbal warning comes before the green card, Arshit. I am sure a verbal warning comes before the green card. You stop being the good guy politician. Talk something harsh. देखिए खिलाड़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जिस तरह से हम चलिए अभी तो यहाँ पर बूस्टर राउंड है क्योंकि एक पॉइंट का भी महत्व और जरूर एक पॉइंट यहाँ पर समझना भी चाहेंगे. परंतु आपका बिल्कुल सही कहना है नवीन कि खिलाड़ियों को वो अनुशासन आना बहुत आवश्यक है. क्योंकि अगर आप इस प्रकार से अपने, क्योंकि इसे पूरा जगत देख रहा है, विश्व देख रहा है आपको फैन कोर्ट पर सभी खिलाड़ियों को, तो खास कर आपके जो वहाँ पर एटिकेट्स हैं
उसके बारे में पता लगता है। और जितने युवा खिलाड़ी आपको देख रहे हैं वो आपके एटिकेट से आपको अपना हीरो बनाते हैं, वो आपको अपने एटिकेट से अपना हीरो बनाते हैं। हीरो जैसा कार्य आशीष नरवाल क्या कर रहे हैं। जी हाँ, 2 पॉइंट। क्या पेरियार पैंथर्स 5 पॉइंट की लीड अपनी विपक्षी टीम को दे बैठा था, परंतु अब एक बार फिर से 2 पॉइंट आशीष नरवाल लेकर आए। नितिन देसवाल का प्रयास था कि चलिए बतौर कप्तान एक और बार इंश्योर करें, पर बहुत ही खूबसूरती के साथ क्या आशीष नरवाल की एक कलात्मक प्रदर्शन है। और नितिन धनकर की हम बात कर रहे थे, परंतु एक बार फिर से उस बात पर हम आना चाहेंगे। नवीन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। Yeah. No, just before that, let's just explain the body language of Ashish Narwal in that previous raid. His thinking abilities is something different than any raider. You cannot expect a raider to put out the right leg across the dashing defender and get through the midline. And once again, Nitin Dhankar has been marvelous today. And Ankit is somewhere not having the right day for himself, even in the defense. Right. So let's just come back on that discussion of the green card. So when that 1 point is awarded, see, I understand every point is important. But what that also gives is, it gives extra authority for the referees, isn't it? As Ashish Narwal goes in for the running hand touch on the captain of Hampi Heroes, Nitin Deshwal, has to go back. So it gives that extra authority for the referees. And you spoke about etiquettes. Yeah, I understand the youngsters follow you for your etiquettes, being a superhero. But let me tell you something, more than etiquettes, because movies like KGF or movies like RRR, which is getting hit by everybody, people are liking to like the anti-hero sort of a role, but it does not happen on the sportsman. It's more than the etiquette, it's the respect that you give for another sportsman, and for the biggest series like this, like Yuva Kabaddi Series. It's that respect that you need to show towards the other sportsman. That is more important, Ashik. बिल्कुल। और देखिए, चाहे हम किसी भी खेल की बात कर लें, अनूप कुमार का दर्जा इतना बड़ा क्यों है कबड्डी के मैच पर? क्यों इतना बड़ा दर्जा है? क्योंकि जब वो मैट पर आते हैं, सभी खिलाड़ी अपने आप, और शायद हम भी जब हमारे सामने वहां पर आते हैं तो अपने आप हम हमारी चेयर पर उठ पड़ते हैं, और एक अलग सम्मान उनके लिए होता है। क्यों होता है? क्योंकि बतौर खिलाड़ी ही नहीं, बतौर इंसान भी एक वो अव्वल दर्जे के इंसान है। देखिए, सबसे अच्छी बात जरूर है ये, देखिए आशीष नरवाल इसी के बीच बता रहे हैं कि चलिए एक अच्छा खिलाड़ी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु एक अच्छे खिलाड़ी के साथ साथ सबसे पहला कर्तव्य आपका है कि आप एक अच्छे इंसान बने। और वो यहाँ पर कबड्डी के मैट पर रहना, हम क्यों कहते हैं अनूप कुमार को इतना बड़ा नाम, हम क्यों कहते हैं महेंद्र सिंह धोनी को इतना बड़ा नाम? क्योंकि जिस तरह से वो विपक्षी टीम हो, चाहे कोई भी टीम हो, चाहे अपने खिलाड़ी हो, चाहे रेफरीज हो, चाहे कोई भी हो, आप परिस्थितियों में विपक्षी का सम्मान करें, आपके सामने वाले का सम्मान करें, आप अपना दर्जा न देखें, वो बहुत आवश्यक है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नहीं, देखिए, ये सारे जो लैड्स हैं, ये सब अच्छे इंसानी हैं, लेकिन क्या होता है, वो गरम खून का जो जुनून होता है ना, जो 24-25 साल में होता है, और अब सबको अभी भी है, तो वो कहीं ना कहीं एक रेस्पेक्ट के ओर से, नहीं, I'll show you my Aadhaar card. I'll show you my Aadhaar card. Sonu Azad gets another red point. Come on. yeah, obviously with photograph. You will not be able to take away from that. Yeah, but just coming back to that on a serious note. Yeah, it's just that respect. It's very simple. See, after the match is done, I know they will put hand in hand together, on shoulder to shoulder, and a block comes in. But once again, is it a super raid? It's a big question, as Ashish Narwal is slowly trying to bring back the Periyar Panthers into this. And yes, it's a super raid, and he's got so many times. He's got that right cover, Nitin Deshwal, today. That's the 4th occasion. And then when the block comes in from the right corner, it is too late. It is too late for Bittu. He has to go back on the bench. The timeout is very, very essential. See, as we speak, if Hampi Heroes are losing this, it is just because Ashish Narwal is taking away a lot of 8 points. And thank you so much for our physio partners, UEN, just taking care of Ashish Narwal's left ear, University of Engineering and Management. देखिए नवीन, कितनी जल्दी से हम पेरियार पैंथर्स की क्यों इतनी बात करते हैं, तुरंत कोच ने देखा कि अब भैया अब हम लीड को एकदम कम कर चुके हैं। तुरंत वहां पर मोहित हुड्डा ने क्या किया, वहां पर ऑफिशियल टाइम आउट बुलाया और बताया खिलाड़ियों को कि आगे की रणनीति भैया आपकी ये होगी।
आगे की Yeah. रणनीति आपके आने वाले 10.5 मिनट का जो समय है, और देखिए कौन आपको स्क्रीन पर देख रहा है, कौन वहां पर मौजूद है। जसवीर सिंह जी स्वयं, जो कि यूपी योद्धा प्रदीप निर्वाल हो चाहे और कोई खिलाड़ी हो, परंतु हम्पी हीरोज नितिन धनकर कह रहे हैं कि आशीष नरवाल लगातार पॉइंट्स ले रहे हैं, परंतु मेरा भी कार्य है पॉइंट्स लेना। और देखिए हालांकि वहां पर आशीष नरवाल ने एफर्टलेसली 210 से ज्यादा पॉइंट्स लिए, परंतु अगर मुझसे कोई पूछे वन ऑफ माय फेवरेट रेडर ऑफ युवा कबड्डी सीरीज, मैं विदाउट ऑफ एनी सोच के कह दूंगा नितिन धनकर इज वन ऑफ माय फेवरेट। Yeah, no doubt, no doubt, no doubt. You know, but somewhere, as I was saying, you know, now no touch points. You are playing with 5 defense, no bonus. Don't give touch points to Ashish Narwal. Let him go back empty-handed. Let him feel the pressure of not getting the raid points because they are lagging behind. And that is what would have been told by the coach of Hampi Heroes, saying, don't give touch points to him. Play in the defense of 5. Take the bonus out of the game and then play in the defense of 5. 4 even, no problem. But then, don't give touch points as the running hand touch is once again very, very effective, and this time he's got out Rinku. So when now Rinku has also gone back on the mat, and you know, Nitin Dhankar is taken away. Rinku, the main raider, one of the support raiders I should say. Now it's all down to Ashish Narwal. So how long can you hold Ashish Narwal without giving a touch point is a big question here, Ashish. और देखिए अब तो 6 का डिफेंस है, बोनस भी यहाँ पर ऑन है, बोनस दे सकते हैं आप, 5 पॉइंट की आपके पास लीड है, परंतु आप एक्स्ट्रा ट्राई न करें और इन्हें 20 सेकंड से पहले पकड़ने का प्रयास ना करें। ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने इसे बहुत गहराई से चर्चा की नवीन, हमने बहुत सारा समय दिया है क्योंकि ये खिलाड़ी अव्वल दर्जे का है, इसके पास तरकश में हर एक तीर मौजूद है, डुबकी लगाना जानता है, जंप लगाना जानता है, लगातार सुपर रेड लगाना भी जानता है। आशीष नरवाल के लिए जितना कहा जाए शायद उतना कम। कितना इफेक्टिव है ये खिलाड़ी, कितना इफिशियंसी के साथ डाइव लगाता है, कितनी डुबकी लगाता है, इनके लिए एक अलग दर्जे पर सम्मान। Let me just tell you something what happened on the strategy wise there, Arshit. On the strategy wise, I really, there we go, this is rubbing salt to injury as Nitin Dhankar is also shoved out of the court, and now it's the 1 point lead only, and what a block from Anish coming in at the right time with the support also coming from Ashish Umesh, both the covers making it really easy to see. And now with the super tackle situation, I'm definitely sure Ashish Narwal will go in for the kill as Sonu Azad is present along with Sandeep. He will go for Sonu Azad, no doubt. Sandeep should just maintain his decorum and he should be quite enough. Sonu, I told you he will go for Sonu Azad, and Sandeep should not be going in for that, and he went in for that all out. And now it's Periyar Panthers leading after a very, very long time. I think this is the first time ever Periyar Panthers is leading in this match, and now they will not look back. Now they will definitely not look back. This all boils down to I'm really very, very disappointed in the way Nitin Deswal has actually gone in to stop Ashish Narwal every single time. I think it's more than 5 or 6 occasions that Nitin Deswal has been caught unwantedly getting out to Ashish Narwal, and once again Sonu Azad, after a very good all-in, is immediately gone ahead and surrendered himself. और देखिए नवीन कॉम्बिनेशन देखिएगा, वहां पर 4 नंबर जर्सी जो हैं वो जानबूझकर खड़े हुए थे, वो उन्होंने प्रयास नहीं किया कि चलिए मैं अंकित के साथ वहां पर थाई होल्ड करूंगा, कि जानते थे अगर वहां पर अंकित जा रहे हैं द सुल्तान सरप्राइजेज तो आशीष मलिक का कार्य यही था कि मैं उसे इंश्योर करूं कि कहीं वो डाइव लगाकर या फिर गिरकर वहां से जंप लगाकर निकल ना पाए। ये होता है कॉम्बिनेशन, और ये आप मुकाबले से पहले कॉम्बिनेशन बनाते हैं और उस समय पर आप क्लिक करते हैं, और 36-32 जहां पर कुछ 2 मिनट पहले के आसपास हम्पी हीरोज के पास 5 पॉइंट की लीड थी, अब देखिए 4 पॉइंट की लीड पेरियार पैंथर्स के पास है। इसलिए पेरियार पैंथर्स टॉप ऑफ द टेबल मौजूद है, क्योंकि नवीन वो जानती है कि कैसे सेकेंड्स में 5 पॉइंट की लीड को कम किया जा सकता है और टॉप ऑफ द विपक्षी टीम आया जा सकता है, किस तरह से वापसी की जा सकती है। नितिन धनकर प्रयास कर रहे हैं, स्फूर्ति दर्शा रहे हैं, चपलता दर्शा रहे हैं, परंतु I'll tell you something, this is not heroic. This is not a heroic comeback from Periyar Panthers. It is the mistakes of Hampi Heroes. Very simple. It is a mistake of Nitin Deswal. Very, very clearly. Because when Ashish Narwal comes into raid, right cover, he did not go back on a couple of occasions in the right time, and then on a couple of occasions he went in for the advanced tackle. He could not block him, he could not dash him out, and then the dupki also came in. So if you ask me, this comeback
Yes, it is a big comeback, but it's not a heroic comeback by Periyar Panthers. It is all about Hampi Heroes' captain not getting that cover into good shape. Because when your cover fumbles, the corners have no work. I was just praying and requesting the defense of Hampi Heroes that not to give out a touch point to Ashish Narwal. Nothing taking away from him. Nothing taking away from him. But as you know, I just like to support or rather talk on behalf of the team which is lagging behind, just to create that interest and just to see if Periyar Panthers can be somewhere pushed to that first loss in the booster round. But I do not think so, Harshit. Let me tell you, there's 5.5 minutes to go and this Periyar Panthers know to win the match. आपकी पूरी बात से मैं सहमत हूँ, परंतु यहाँ पर डिफेंस अफसर चढ़ रहा है। देखिए पहले आशीष मलिक के साथ वहां पर गए, डिफेंस किया अंकित सुल्तान ऑफ सरप्राइजेस ने। अब जानते हैं कि नितिन धनकर हैं, पहले सोनू को अपना शिकार बनाया था, अब नितिन धनकर को बनाया है और अब वहां पर चेन में थे नवीन के साथ। और नवीन, मैं आपकी टोटली बात से अग्री करता हूं, अब ये अच्छा मौका है, हालांकि 5 का डिफेंस है, परंतु मैं तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर आशीष नरवाल के टेम्परामेंट की। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि नितिन देसवाल ने लगातार गलतियां की है, लगातार गलतियां हम्पी हीरोज के डिफेंस ने की है, परंतु टेम्परामेंट देखिए ना, आशीष नरवाल का टेम्परामेंट देखिए, उन्हें अपनी स्किल्स पर कितना आत्मविश्वास है, कितना आत्मविश्वास उनके कोच मोहित हुड्डा को उन पर है कि भैया आशीष तू जब तक मैट पर रहेगा तो किसी भी समय किन्हीं भी 1 मिनट के अंतराल में तू वापसी करा देगा। और 6 पॉइंट की लीडर पेरियार पैंथर्स के पास है। And can you believe that it was a do or die raid? Yes. In a do or die raid, if you are playing such a high line of defense there, Sandeep on that right corner, I think it was Bitu there, correction, Bitu was there in the right corner who just went out on the bench. You just can't have such a high line of defense and not against a man who's already got 19 raid points, and now he will go there, stand and kill the clock down. He also knows to slow down the game. That is really important, because as I said, there is no way now the Hampi Heroes will make a comeback into this match. It is once again it's going to be Periyar Panthers, and I really hate to as a person who has to be making sure the excitement has been held even at the last minute of the raid or of the match. I'm really feeling sad for what Hampi Heroes have done, especially in the defense. They had a big lead, Arshit. They had a big lead, and as I said, this is what Periyar Panthers know to do. They know to, win matches. Forget making a comeback. They know to win matches. As Tinku also has been blocked and sent out. And check that out. Anish has got a high five after this tackle. Can you believe this? And it has happened everything in the second half. He did not have a single point in the first half and 5 tackle points in the second half for Anish. ग्रेट वर्क बाय अनीश। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, देखिए आपने नवीन बिल्कुल सही कहा कि अब यहाँ से वापसी के दरवाजे कब बंद हुए थे, जब आशीष नरवाल डू और डाई रेड में आए थे और अपना शिकार बनाया था। देखिए वो एक बहुत अच्छा मौका था, बहुत अच्छा मौका हम्पी हीरोज के पास था। अगर वहाँ पर आशीष नरवाल का टैकल होता तो आशीष नरवाल ऑफ द कोर्ट जाते, और सबसे बड़ी बात ये थी कि आपके टीम के रेडर आपको मिल जाते, शायद वहाँ पर सोनू आज़ाद वहाँ पर बेंच पर बैठे, सबसे पहले वही रिवाइवल होकर आएंगे, सोनू आज़ाद आ जाते, नितिन देसवाल जाएंगे, प्रयास करेंगे, नवीन शर्मा कहेंगे कि चलिए, और अब डू और डाई रेड एक बार पुनः है। क्या ये एक आखिरी मौका है नवीन, क्या एक ये आखिरी मौका है हम्पी हीरोज के पास वापसी का, पिंगल बजाने का? Yeah, super tackle on. Let us not even talk a word. Let us see what's going to happen. I really want this 2 points for Hampi Heroes. This is the last opportunity for them. डू और डाई। Okay, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Thank you so much. Thank you so much, Hampi Heroes. 3 defenders. Super tackle. Marvelous. Fabulous. Fantastic. Now you have a chance. Now you really have a chance. But let me tell you, Harshit, if there was an error that came in from Hampi Heroes in that super tackle, I would have started to talk in favor of Periyar Panthers and said, okay, I would have started to praise them. I was all ready with my lines to start praising the Periyar Panthers the way they have defended. This is a good defense. This is a marvelous defense, no doubt. लाइन्स यहाँ पर यूज कर लेना चाहिए मुझे लगता है। देखिए सोनू आजाद और पिछली बार में टिंकू, क्यों आपको इतना ज्यादा वहां पर खड़े रहने की आवश्यकता है एक फ्लैंक में?
क्यों आप नवीन और आशीष मलिक जैसे डिफेंडर्स को मौका दे रहे हैं? अब देखिए मौका आपके हाथ लगा है, आपको रिवाइवल कराना चाहिए था नितिन धनकर का। जाते क्विक रेड करना बहुत आवश्यक है। सोनू आजाद के पास स्पीड है, नवीन बहुत अच्छी स्पीड है उनके पास, और उन्हें जाना चाहिए था, थोड़ा सा डिफेंस को अनसेटल करने का प्रयास करना चाहिए था, बजाय इसके कि वो वहां पर जाकर खड़े हो गए थे कुछ समय के लिए और आसानी के साथ कवर के डिफेंडर्स आए, उन्होंने वहीं खड़े खड़े सिर्फ नीचे झुके थे। एक्चुअली उनका फोर्स भी उस तरह से नहीं था कि वो मिड लाइन की तरफ जा रहे हैं, डुबकी ऐसी नहीं थी कि वो मिड लाइन की तरफ जाए, जहां थे वहीं बैठ गए। Actually, as if avoiding a bomb scare that is falling on you. That's what he did. But then this is going to be the second empty raid for the Periyar Panthers, because once Ankit has come in and he's killed the clock and gone back, and now it's Ashish Narwal doing the same thing. But let me tell you something, even now there is opportunity for Hampi Heroes, because 1 minute 20 seconds is a huge time in Kabaddi to make a comeback of 6 points. Now a raider from Hampi Heroes, I understand it's a captain, Nitin Deswal, yes. He had to go back and get some touch points. Come on, Nitin Deswal. Right. डू और डाई रेड है, परंतु फिर भी अगर आपको ये 2 पॉइंट यहाँ पे मिल भी गए तो भी 36 से 40 होगा स्कोर। और देखिए आपने 3.5 मिनट में ही बता दिया था। See what's the defense going to do this time? Diving ankle hold, Nitin Deswal. Ankit Sultan of Surprises had been napped down. That is nice. 2 super tackles attempted, and as you said, Arshit, very, very correctly, it is just going to be 36. Another 4-point lead for Periyar Panthers now. जी अभी भी 4 पॉइंट की लीड है, नितिन धनकर वापसी कर रहे हैं। अब देखिए पेरियार पैंथर्स ने जो कल कार्य किया था काजीरंगा राइनोज के विरुद्ध कार्य किया था, ओहो डू और डाई रेड है ये भी। तो देखिए पॉइंट मिलेगा, 1 पॉइंट आसानी के साथ दे देंगे। ये है टेम्परामेंट कि पेरियार पैंथर्स बताता है कि उनमें खेल की शक्ति के साथ साथ उनमें गेम को रीड करना कितना अच्छा आता है। नवीन, गेम की रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी है आशीष नरवाल और उनकी पूरी टीम की। जिस तरह से अमित हुडा में है उस तरह की पूरी झलकियां यहाँ पर आपको पेरियार पैंथर्स में नजर आती हैं। Okay, let me tell you something. Ashish Malik did the right thing there on the left corner, did not allow anybody else to go in for the ankle hold. He did not wanted anybody to come in, even the support also. But now, even if this is a last raid for Periyar Panthers, I am damn sure that Nitin Dhankar will get another opportunity. He has to quickly go in, whether it's a 2-point, whether it's a 3-point. Let him go and try his best. Let him go and try his best. He should not come back with 1 point. No, he should not do this. Don't come back, brother. Come on. Right. Ashish Malik, or rather the left corner there once again, just making sure he just gets 1 point. And now it is all over. But I'm happy somewhere that Hampi Heroes will be getting that 1 point, Ashit. Hampi Heroes will be getting 1 point. Yes. देखिए बॉक लाइन पर डिफेंस करा है, ये सिर्फ देखने के लिए अच्छा लगता है, सुनने के लिए अच्छा लगता है। आराम से वो रेड लीगल करेंगे और आशीष नरवाल कहेंगे चलिए अगर ऐसा है तो मैं अंदर आऊंगा, प्रयास भी करूंगा और उसके बाद बोनस के साथ साथ क्या एक टच पॉइंट भी लेके जा सकता हूं। जी नहीं, ओ सिर्फ 1 पॉइंट का मार्जिन। अगर आशीष नरवाल उस सूप 2 और डाई रेड में अगर धरे दबोचे जाते, जी नहीं 2 पॉइंट का रह जाएगा। आशीष नरवाल ने इंश्योर किया कि सबसे पहले बोनस मिल जाए, उसके बाद ये मुकाबला समाप्त हो जाएगा। 6 consecutive matches wins for Periyar Panthers, 41-39. Naveen, it's all yours. What do you want to say about this big game? मैं बस इतना कहूंगा कि पेरियार पैंथर्स अनबीटेबल, अनटचेबल, unmatchable, because every team that has come against them has not been able to even touch them, has not been even able to match them, and they have not been able to beat them. So unbeatable, untouchable, unmatchable when it comes to the points that they can win across. But somewhere Hampi Heroes today actually overtook them, and in the second half they came back so strongly, courtesy all the errors that came in from the cover defenders, especially Nitin Deswal and Mohit Narwal there for Hampi Heroes. They really faltered and gave away a lot of points for Ashish Narwal. See, even the beginning of the second half was nice, but then when Nitin Dhankar could not get you points, and there started the errors for this raid. This raid was the turning point for me, where you put out the right leg over the midline, and then the second half completely belonged to Ashish Narwal. Look at this. The Josh Jaspan Junoon is something, and this dupki you were talking about, Ashish, in a do-or-die raid. युवा कबड्डी सीरीज की बताते हुए कि क्यों ये सर्वश्रेष्ठ ट्रेडर हैं। आज भी 20 पॉइंट
देखिए इनके लिए क्या एक सुपर 10 की हम बात करते हैं, बट इनके लिए बड़ा मामूली आंकड़ा है वो, क्योंकि फॉर्म बहुत अच्छी है। और ये देखिए मैं इसकी भी बात कर रहा था, सोनू आजाद सिर्फ वहीं झुक गए थे और ये सुपर टैकल्स अच्छे थे, परंतु उस रेड में वहां पर आशीष नरवाल अगर सुपर टैकल हो जाते तो अद्भुत कार्य हो सकता था। अनीश का आज प्रदर्शन देखकर अच्छा लगा, 6 पॉइंट उन्होंने प्राप्त किया, अच्छा लगा उन्हें देखकर। And also all credits there for Nitin Dhankar for that 17 raid points that he is put in. See, the raid points is somewhere very marginal, and I'm happy that the tackle points remain the same, because it was all the Periyar Panthers tackle points coming in the second half, and Anish was that man to get that 6 tackle points under him, and Navin Sharma to make sure he gets 3 tackle points. But in the first half they were struggling, but in the second half the defense of Hampi Heroes led by Captain Nitin Deswal should have somewhere controlled. But yeah, it's the end of the game, but it's a good fight. But all credits to Periyar Panthers. And let me tell you something, that's a very important point. In the last few games, Periyar Panthers are winning by less margins. In the previous games, they have won with big margins. Of course, they hold on to the top position. And Hampi Heroes, of course, they hold on to the third position. No changes in the points table after this match even. Okay, I am watching this trend of Periyar Panthers now winning with only less margins. Do you think क्या दूसरे टीम अभी जान चुके हैं कि कैसे पेरियार पैंथर्स को कम स्कोर दिया जाए, और कहीं ना कहीं एक दिन आएगा कि पेरियार पैंथर्स एक हार का सामना भी करेंगे? हर्षित, देखिए बिल्कुल आएगा, क्योंकि युवा कबड्डी सीरीज है और आशा पर तो यहाँ पर दुनिया कायम है ना। देखिए उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, ये आपने सुना है। और बिल्कुल यहाँ पर आपको शायद मुझे आज लग रहा था कि हम्पी हीरोज के पास एक बहुत अच्छा मौका था, उनके पास यहाँ पर आज पटक नहीं देने का, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही थी, स्ट्रॉन्ग टीम थी, 5 पॉइंट की लीड्स भी थी। और आप जरूर देखना चाहेंगे पेरियार पैंथर्स, परंतु आपने सही कहा कि पेरियार पैंथर्स को मौका नहीं दे रहे, परंतु एक बात भी बिल्कुल आपने सही कही थी कि पेरियार पैंथर्स नो हाउ टू विन द मैचेस। अंडरलाइन करता हूं मैं विन पे, हाउ टू विन द मैचेस। Yes, absolutely. And then winning by lesser margins in the last 3 matches. Somewhere I am feeling that the trend has started for Periyar Panthers. Let's see what's going to happen to Periyar Panthers as the round progresses in the booster round on day 6. But at 6 p.m. we have the Roba Tigers taking on the Maratha Marvels. That's a good match. And then once again at 8 p.m. we have the Kaziranga Rhinos once again trying to have that first win against the Aravali Arrows in the booster round. So for a team who was top of the table in the survival round, hasn't won a single game yet in the booster round. So that's going to be a big match at 8 p.m. on Fan Code. I was Navin Shari, and it was fantastic as always talking to Harshit, to you, and very informative and somewhere even argumentative also. I like that, to have that with you. Thank you so much for being a sport, Harshit. Thank you so much, Naveen. Thank you so much, guys. Signing off for the match number 2 of day number 6 of booster round.
से लेके